Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is how to prepare the loan amortization table and how we can compute the installments and the interest payments and the annual interest expenses and the classification of between the interest and the principal amount. So it is very important and key topic of time value of money from its practical point of view. We will produce here a loan amortization table. Let's start how we can demonstrate it into our Excel sheet. Let it first instance, we assume that the loan amount is that we borrow today from any financial institution. Uh, we have a big little font. We have today a loan amount of rupees 50,000, and the present interest rate is 10%. That's the per annum. Let we write here, it is a per annum. Interest rate is a per annum annual rate. And the loan is to be repaid into 5 equal installments. Say the number of years that are 5 years in which we will have to pay this loan. So then how we can compute? Our question is here that how we can compute the equal annual installment if the cash flows, if the installments are to be paid at the end of each year. Whenever we talk about end of each year, then it means that we are talking about an ordinary annuity, as we have seen in the concept of present value of an ordinary annuity. And if cash flows occur at the beginning of each year, then we will use the concept of present value of annuity due. So here we have an loan amount of 50,000. The interest rate per annum is 10%, and the number of years in which we will have to pay this loan, we will have to pay the installments, equal series of installments. That's very important to this concept. So in first instance, we know that the concept of present value of an ordinary annuity is equal to cash payment multiplied present value interest factor of an annuity for given interest rate and for given number of periods. In first instance, there are two parts. If we talk about here about the computation or computational formula, that while computing present value of an ordinary annuity, we use payments multiplied present value interest factor for given interest rate and for given number of periods. So in first element that we will have to compute present value interest factor of an annuity for given interest rate and for given number of periods. We model here is equal to, we know that the present value interest factor is equal to of an annuity is equal to
1 minus 1 over 1 plus I and whole power n divided by interest rate. So in our computation, we will use 1 minus 1 divided by 1 plus, we will use interest rate and we will fix it because it will remain fixed while this computation, and the power sign will be assigned here. Then we will, because it is for 5 years and as 5 years, so we will close here this function. So the first computation, and then it will be computed to this element. After closing this component, it will be divided by interest rate, and that we will fix it again. So we have now computed present value interest factor for an annuity. We make it again formatted. We may use up to 3 numbers. Okay. Now we have computed this. We can easily now compute the installment or payment that we will have to pay over the 5 years at the end of each year. That's equal to the loan amount, which is a present value of an ordinary annuity, 50,000. Sorry, we will use this column divided by 1 divided by interest factors, and we have computed the installment, that is 13,000. Let's format it into 2 components. Now we have computed payment. अगर हम यहाँ पे देखें, मैं दोबारा से इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं. जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की एक प्रैक्टिकल प्रीव्यू देखते हैं, तो उसमें अमोर्टाइजेशन टेबल, इंस्टॉलमेंट्स कंप्यूट करना, ये एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है. अगर आज हम बारो करते हैं 50,000 रुपए की अमाउंट और एनुअल इंटरेस्ट रेट हमारे पास है 10%, और 5 सालों के ऊपर हमने इस लोन को पे करना है, इंस्टॉलमेंट्स को पे करना है, और जो इंस्टॉलमेंट्स पे होनी है वो एट द एंड ऑफ ईच ईयर पे होनी है. अच्छा, जब हम बात करते हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के इस चैप्टर से हमें ये बात समझ आ चुकी है कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर जब भी कैश फ्लोज को ट्रीट करेंगे, तो ये आपके जो है वो एट द एंड ऑफ ईच ईयर कंसिडर होंगे, और इनको हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इसको हम ऑर्डिनरी एन्युटी के कॉन्सेप्ट में लेंगे. अच्छा, क्योंकि लोन अमाउंट आज एक अमाउंट ली गई है और इसकी इंस्टॉलमेंट्स का प्लान आगे हमने 5 सालों के लिए देना है. अच्छा, हमने इंटरेस्ट फैक्टर कंप्यूट करना है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी, जो इस एक जो कंपटीशन आपके सामने है, इसकी मदद से हम जो है वो कंप्यूट कर रहे हैं. और हमें ये बात बड़ी क्लियर पता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू interest factor of an annuity for given interest rate for given number of period is equal to 1 minus 1 divided by 1 plus
and I 1 divided by 1 plus I interest rate, its per number of periods, and divided by I. इंटरेस्ट रेट के साथ इसको हम डिवाइड कर देंगे. So it will be used while modeling the values here that we use here in upper bar. So now total amount to be paid for 5 years. The amount which we are going to pay over 5 years is equal to B5 multiplied number of years. So in aggregate, we are going to pay up to 2 figures, 65,949.37. And the interest payment that we are going to pay here that's the different, that's interest payment is the different, the total amount that we are going to pay here, total amount minus the principal amount or the loan amount that we had taken. So we are going to pay 15,949 interest over this loan. अगर आज हमने 50,000 रुपए का लोन लिया है, 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है और 5 सालों के ऊपर हमने इसको पे ऑफ करना है, तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी कॉन्सेप्ट, ये हमारी आती है 13,199.87. एंड द टोटल अमाउंट जो हमने 5 सालों के लिए कंप्यूट की है दैट इज 65,949.37. So the interest that we are going to pay over 5 years, that's the difference of total amount that we are going to pay over 5 years minus the loan amount, and that's equal to 15,949.37. Now here our first requirement is completed, that we have completed the values and values regarding interest factor, transfer value interest factor, the payment, the installment that we have computed, total amount that is going to be paid over 5 years, and interest payment that we have computed. Now we are interested to prepare a loan amortization table. Loan amortization table. Loan amortization table. Loan amortization table we will initiate from the end of year. We will use here column. We have make another row. End of year, then interest, the payments, installment payment, beginning of principal,
beginning of principal, interest, plus principal amount and end of year. Beginning of year principal and end of year principal. So we are computing here. Here the question that arises, let we say it is our first column, it's a second, it's a third column that's equal to second column multiplied interest rate and the principal amount is equal to the fourth column. Fourth column is equal to column 1 minus third column, and fifth column is equal to second minus fourth column. So let it be into boxes. End of each year, so let we make it completion. It's a 1, 2, 3, and we can get these values. We can stretch it up to 5, up to number of years. Payment is equal to the payment column is that we have computed here, that is 13,000. So it will be fixed for each year. It will never change, and we will create it for 5 years. Beginning of year principal is equal to लोन अमाउंट, इसको हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये हर साल रोटेट होगा. और इंटरेस्ट हमारा कैसे कंप्यूट होगा? इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग प्रिंसिपल अमाउंट multiplied the interest rate. Here we will make the interest rate fixed because it will remain fixed. We will change the values of the beginning of year principal, and the principal amount will be equal to column 1 minus column 3rd, and end of year principal that will be computed equal to second minus fourth. It's the second column minus fourth column, and again the principal amount will be equal to because the last year's ending year principal will become for second year the beginning of year principal. तो पिछले साल का प्रिंसिपल अमाउंट है वो अगले साल के लिए जो है वो बिगिनिंग बन जाएगी, और इस चीज को हम यहाँ पे एड्रेस को असाइन कर देंगे. इसी तरह से हम इस कंप्यूटेशन को हम इस तरह से टेबुलेशन को स्ट्रेच कर देते हैं और हम अपनी कंप्यूटेशन को यहाँ तक अप्लाई कर देते हैं.
let's make computations. Again, it will be reported is equal to let it do it one by one. So it's now completion. In our computation, we have now computed the values, and amortization table is very clear. And we can use the blocks, the table in a good manner. The presentation of table. And we can use the tabulation in this manner. Okay, so our table is now completed, and if we can now use any kind of amount. अगर हम 5 सालों के लिए देखें, अगर हम 60,000 भी करते हैं तो वो हमारा पूरा जो आखिर में हमारी सारी इंस्टॉलमेंट्स पे होगी। और इसमें हम ये भी चीज देख सकते हैं, इज इक्वल टू ऑटो सम। इसको हम कर देते हैं इन सारी सीरीज को। So let we have sum of all these values. We have let it first in a first example 50,000 जो हमने कंप्यूट किया था 15,949.37। एंड इन द सेम वे हमने जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट का सम था वो, अब ये क्वेश्चन ये आ गया कि ये हमने इसका ब्रेकअप किया क्यों। अच्छा, जब हम अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, हम इंस्टॉलमेंट तो पे कर रहे हैं 13,199.87 रुपए की। तो इसमें हमने बाइफरकेट करना है कि इस एक इंस्टॉलमेंट में पहले साल हमने कितना इंटरेस्ट पे किया और कितनी प्रिंसिपल अमाउंट पे की। क्योंकि हर साल हमने अपनी इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो है वो, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस टू इंटरेस्ट पेएबल जो है वो करके, और जो इंटरेस्ट जो है वो पेएबल है दैट विल बी टू कैश। ये ट्रांजैक्शन हमने करते जाना है। हमारा अकाउंटेंट इसको हर साल इंटरेस्ट को रिटायर भी कर रहा है, पे भी कर रहा है, और हर साल ट्रांजैक्शन होगी। पहले साल 5,000 की इंटरेस्ट डेबिट होगा, फिर 4,181 रुपए का इंटरेस्ट डेबिट होगा, फिर 3,280 रुपए का इंटरेस्ट डेबिट होगा, फिर 2,299 रुपए का इंटरेस्ट डेबिट होगा, फिर 1,199.07 का इंटरेस्ट डेबिट होगा। और प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है 50,000 और हमारी बैलेंस शीट में डेट में, ये लॉन्ग टर्म डेट में जहां पे हम इसको रिटायर करेंगे, तो हर साल 50,000 रुपए में पहले साल हम
रुपीज को डिडक्ट करेंगे, फिर अगले साल हम 9008 रुपीज को डिडक्ट करेंगे। इस तरह से हमारा डेट्स जो है वो रिटायर होते होते हमारा 5वें साल क्या जो हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। सो दिस इज द वे दैट हाउ वी कैन कंप्यूट इंस्टॉलमेंट्स फॉर ए गिवन सेट ऑफ जो हमारे पास है एक ऑर्डिनरी एनोटी का, और जिसको हमने जो है वो यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाया। दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ जो है वो डिस्काउंटिंग को यूज करते हैं और अपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स को कंप्यूट करते हैं, और किस तरह से इसको आगे इसका हम जो है वो लीज फाइनेंसिंग में भी इस चीज को हम जो लीज वर्सेस परचेज डिसीजन में भी हम इस चीज को यूज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक।